Okay, so the Ma'am, topic can you is repeat the topic? yeah, impact of COVID on Indian students. So now again, I just tell you all that you have to go with the positive impact, negative impact, what kind of impact it holds. Then you have to go for different dimensions, where the students, what have been the changes brought in the life cycle of students, how they are being, it's been a positive one, it being a negative one. And then one of you will conclude it out with a very generic one, right? So it should be generic. I'm telling you, you will hold on all the opinions, but then end on very generic level. Who is going to start with the introduction? Ma'am. Shivam? Shivam, check your Yes, ma'am. connection first. Is it fine? Because your video is getting paused. Yes, ma'am, because I'm not at home right now, so I think. So why are you not at your place right now? You are to be there, na? Yes, ma'am. So just check your connectivity, otherwise it won't be a good one, right? Okay, you're going for introduction. Okay. Who's going for conclusion? Conclusion? Who's going for conclusion? Ma'am, I can conclude. Okay, Swarnima, for both of you, Shivam and Swarnima, you have to go with a very generic, you can say conclusion, generic introduction. Then Shivam, you have to give your own viewpoint. Swarnima, before you go for a generic one, you have to conclude everyone's viewpoint, right? What everyone spoke. Was it in a favor? What was it was negative? And then you have to give a blending mode that, yeah, both are there and what is the purpose and not, right? So your 2-3 minutes starts now. It's 6:20, it's 13 by my side. I'll start at 6:15. Okay, the easiest topic, go for more and more dimensions. Go for some examples also. Make at least 10 pointers. That's gonna help you out. So, good morning, friends. My name is Shivam. Uh, Shivam, wait, I'll let you know when to start. Opinion, this is very relevant topic and important. Shivam, please wait, I'll let you know when to start. Okay, ma'am, I think 6:30 you said. No, no, I'll tell you. Wait for a minute. Okay.
Yeah, before you start, be ready that you have to give short pointers only, not very lengthy pointers. Okay, the shorter the point, the more useful it is. Do not try to cut each other in between. Let the other person also speak, right? But it should not be you're giving other person only chance. Try to make your own hold, but let other persons also complete and speak. That is going to be negative if you keep on cutting the other person. Okay, now Shivam, you can start. Okay. Thank you, ma'am, for giving me the opportunity to start the introduction. I'm happy to start the discussion. My name is Shivam. In my opinion, this is a very interesting topic. Our topic today for the discussion is impact of COVID on Indian students. So I think there are both aspects, positive and negative aspects. So some positive aspects are like during COVID, some people were able to take take the courses from all over the world and have reached all over the world best teachers, best knowledge. They can take it, and they have also not able to waste their times and basically easily available for our students. There is a laziness also comes in the students, and there the students that goes to the schools and daily activities, and the students they're not able to increase their strength in making project with other students also. Uh, and other than that, there is also health issues to the student during the due to the COVID situation in India. So which impacts more our Indian students also. And due to the COVID, there are many students that are not able to do physical activities, basically, and not able to interact with their lot of the friends. So by which they are and eye issues also, because there they have to watch basically their lectures on by their eyes, not practical classrooms there available that time available. So impact on the eyes also. So now I open the house to all of you to participate in the debate discussion. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं लास्ट स्पीकर की बात से सहमत हूँ, लेकिन इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि कोविड की वजह से बहुतों की ये गैप भी लग गए हैं, बच्चों की अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, स्टूडेंट जो कॉलेज के हैं वो प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाए अच्छे से, थियोरी उनके प्रैक्टिकल्स कमजोर रह गए और हेल्थ इशू भी आ गए उनमें। So many people aim for higher education, but they didn't go for higher studies. Even, but they do the software jobs and they got the experience. So the positive point here is people who didn't go for higher education and got some experience. And also people after COVID period, they are more interested in physical activity and maintaining mental stress. During COVID period, these two sectors, people have a negative impact, but there now young students have more awareness on health and all. I would like to develop the idea basis on the age groups, like starting from the small age group of 3 to 5. Those kids started their schooling from nursery online mode and they never learned to write, because in small classes teacher help us by their hand to learn us write, so that didn't happen. And for the other age group, like above 5, they forgot the practice of writing long answers. So that was Yes, Sunima, a I can setback add on to your small point kids. also. Yes, the students that are not interested in studies, they are more towards basically जो students ज़्यादा interested नहीं थे अपनी पढ़ाई में, वो उन्होंने पढ़ाई करनी बंद बिल्कुल ही कर दी। और बेसिकली बिकॉज पासिंग का कोई क्राइटेरिया गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं आया, जैसे कि आप जानते हैं क्लास 10th और 12th को डायरेक्टली पास कर दिया गया। तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे पास कर दिया जाएगा और उन पे काफी इम्पैक्ट पड़ा उसकी वजह से। Also, students became more and more dependent on internet for answers rather than books, and this impacted teachers also, because they were losing discipline in the online classroom. And syllabus was also decreased by NCRT recently, because they said that students are not able to cope up due to the COVID period lag. I agree with Swarnima, but and also there is no teacher-student interaction.
So in elementary school, there it will be more effect, and also people are more students are more addicted to games and other effects also. And during COVID period, BTech students don't have practical knowledge as there were no labs, as they don't have any physical labs. So practical knowledge is more affected. Yeah, I agree with you. These are some negative points, but I want to add new positive points of impact of COVID. So there were all colleges and school were online, so no travel. When मतलब स्टूडेंट्स को ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं थी, तो उनमें उनका टाइम बच गया. सो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट कैन बी they spend more time with family, they got more time to explore their hobbies, जो उनको कॉलेज के टाइम पे नहीं मिलता था. एक्स्ट्रा थिंग्स कि सब सब एजुकेशन और एवरीथिंग goes on goes to online mode, so student can learn from any student can learn at any time and anywhere and of any field. मतलब एजुकेशन हमारे कॉलेज के सिलेबस ही नहीं, लेकिन हेल्थ की लर्निंग्स, कुकिंग, any hobbies they want, they can learn from online. So this is a positive impact of COVID on students. I would also like Knowledge to people have point extra with curricular Aditi. activity. मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा फाइनेंशियल टर्म में, जैसे कोई अगर गेट की तैयारी कर रहा है और अगर ऑफलाइन जाता है तो उसका खर्चा बहुत ही ज्यादा आता है, 1 से 1.5 लाख रुपए. तो वो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो ऑनलाइन एजुकेशन जो गेट की तैयारी But you are diverting from the topic. The topic is during during COVID. If they want to prepare online, they can also do it right now. नहीं, कोविड के टाइम से ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिला, उतना पहले नहीं थी. कोविड से पहले इतना कोई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मुझे पहले नहीं पता था ऑनलाइन एजुकेशन का. अगर कोविड आता नहीं तो शायद हम ऑनलाइन एजुकेशन में मैंने खुद किया तो मैं शायद करता भी नहीं अगर कोविड नहीं होता. तो ये कोविड की वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट है. जी I would also like to add some positive points on student, like they learn many other skills, like they spend their time to learn music, dancing, and also some students like learn to cooking, and they spend their time on meditation and yoga, and they used to वो नई टेक्नोलॉजी से जुड़े, जैसे ऑनलाइन क्लास में लोग नई टेक्नोलॉजी का यूज किए. और इसका मैं नेगेटिव इम्पैक्ट ये बताऊंगा कि जैसे कि कुछ बच्चे जो रूरल एरिया में पढ़ते थे, ऑनलाइन क्लास को एक्सेस नहीं कर पाते थे, जाके वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी सही से नहीं आ पाता था. और उनके लाइफ, कुछ बच्चों के लाइफ स्टाइल पे, हेल्दी लाइफ स्टाइल भी मतलब डेविट हुआ ड्यू टू कोविड. वो घर पे बैठे रहते थे, अनहेल्दी खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट भी हुआ. COVID was basically a very sad time for all of us because our loved ones were getting ill, and this had a major impact on kids also because they were having classes but their parents were ill, and this led to even not take them tests at times. So it had a negative impact in that time, but teachers were very helpful. So they had a new experience at a very small age to tackle situations. Yes, I agree with you, स्वर्णिमा. मतलब जब उनकी स्कूल स्टार्ट हो गई तभी उन्होंने मोबाइल से ही स्टार्ट की, जैसे आपने बोला. तो इसी वजह से बच्चों को और यंग स्टूडेंट्स को भी मोबाइल का एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. मतलब क्लास चल रही होती है, लेकिन उसके साथ हम और कुछ भी देखते हैं. वो मतलब स्क्रीन से एडिक्शन, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट था कोविड के टाइम पे. और मोबाइल का नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि बहुत सारे बच्चों का आंख पे बहुत सारा नेगेटिव असर पड़ रहा है. इससे आंख बहुत बच्चों को खराब हो चुके हैं लगातार मोबाइल स्क्रीन पे देखते देखते. जैसे ये ऑनलाइन एजुकेशन का इसमें मतलब अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि फाइनेंशियली इसमें फायदा हो रहा है, बट नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इसमें क्लास के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा. अगर ऑफलाइन होगा तो एक शेड्यूल रहेगा, उसमें हमें जाना रहेगा, तो वो एक टाइप मतलब हमें पता है कि क्लास है तो जाना पड़ेगा. बट इसमें कोई फोर्स नहीं करेगा तो वो एक डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं हो पाएगा. तो ये भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है. Yes, I agree with you. As you said, like discipline, मतलब कोविड के
जब कोविड नहीं था तब स्टूडेंट्स को पीयर प्रेशर था कि सब लोग ये कर रहे हैं तो हमें भी ये करना है। लेकिन कोविड की वजह से एक न्यू इम्पैक्ट आया है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन होना सीख गए हैं, और कुछ लोग वो सेल्फ डिसिप्लिन का नेगेटिव इम्पैक्ट भी करते हैं। मतलब कहीं मतलब Yes, मोबाइल का agree. एडिक्शन इज एन नेगेटिव पॉइंट ऑफ दैट। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन भी इंक्रीज हो गया है कोविड की वजह से। जो स्टूडेंट पॉजिटिव है स्टडीज में, उनके लिए वो बहुत अच्छी चीज हो गई है। Yeah, I Yes, completely Aditya, agreed I with want to add to Aditi, your as point. there is Like, a student also basically indulge when they go to college, school and colleges. Also, they indulge in many projects or what their other basically classmates are doing. So when they are at home, they are become more lazy and towards जी more to बिल्कुल। their students and not able to basically जब आपका फ्रेंड काम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो आप भी एक तरह से इन्वॉल्वमेंट होते हैं और आप भी चाहते हैं कि हम भी नए प्रोजेक्ट्स करें उनके साथ। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि बच्चे स्टूडेंट जो कॉलेज लाइफ के फाइनल के स्टूडेंट हैं, वो अच्छे से अपना प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, जिससे उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इंटरव्यू वगैरह में। और वो इंटर्नशिप जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट इंटर्नशिप नहीं कर पाए, उनको भी दिक्कत आ रही है। तो ये इसके बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है स्टूडेंट लाइफ में, जो कि इंटरव्यू में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वजह सोच रहे हैं क्या पढ़े, कोविड क्या का तो किए नहीं, क्या पढ़ के जाए, क्या करें। ये भी एक But कोविड का impact- एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी रहा है कि जैसे जो बच्चे हैं वो अपने फ्रेंड के साथ नहीं मिल पाए, उनके साथ सोशली गैदर नहीं हो पाए, वो लोग फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर पाए, जिसके कारण उनके हेल्थ पे भी असर पड़ा है और सोशली उनके बिहेवियर पे भी असर पड़ा है, जिसकी ज्यादा फ्रेंड नहीं बना पाए वो लोग। COVID कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए एक नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि कॉलेज लाइफ जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं वहां पे कॉलेज में जाके, अगर वो ऑनलाइन रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मतलब साथ में रहेंगे तो नए आइडियाज आते हैं, नए लोगों से नए एक्सपीरियंस मिलता है। वो मुझे नहीं लगता ऑनलाइन से कहीं भी किसी भी तरह से हम सीख पाएंगे। एक बहुत बड़ा नेगेटिव But COVID had this positive impact on students But- that they could have exposure to different type of competitions, and nowadays it is seen that on school level more and more competitions, students are participating in more and more competitions like organized by IIT Bombay. So they are getting more exposure and their creativity is also being nurtured. So that's a positive point. मतलब स्टूडेंट्स को सेल्फ एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, To use ना कि internet in a पीयर। better way. Yes, yes. यस। Yeah. बट ये भी देखा गया बेसिकली ड्यूरिंग कोविड जो काफी स्टूडेंट्स की आईज थी, उनका नंबर मतलब बेसिकली काफी इम्पैक्ट पड़ा उन पे, बिकॉज उनकी डेली क्लासेस एंड डेली एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ओनली ऑन मोबाइल, इज देयर होमवर्क, ऑल क्लासेस एंड एवरीथिंग। सो एक बेसिकली नेगेटिव पॉइंट है कोविड का। जी बिल्कुल, रिलेटेड इश्यू रहा है इसमें। मोबाइल से बहुत एडिक्ट हो गए हैं लोग, एडिक्ट हो गए हैं मोबाइल से। कुछ भी करने जाते हैं तो मोबाइल, पढ़ते वक्त भी मोबाइल चलाते रहते हैं, खाते वक्त भी मोबाइल चलाते रहते हैं। ये भी इसका इम्पैक्ट आया है। And because of this usage of mobile, watching of series and aggressive games, students have started using slangs in the school premises, and teachers are very worried about that. And even the counselors nowadays are saying that this is a general practice now. So it is a very bad impact on the health of mental health of students. Yes, I agree. Mental health is quite disturbed this time. It is from COVID. They are saying it is the correct time to focus on everyone's mental health, and Yes. especially the students, because they are the young generation and they need to take care of themselves first to take care of others. So students have to take care of mental health. Yeah, Yes. I agree with Aditi, but during COVID, most of the effects on mental stress and no physical activity. But after COVID period, due to side effects of COVID vaccine or some other reasons, people are more concerned about health and more focus on yoga, meditation, and physical activity. So after COVID period, awareness of health has increased in people and mainly students also between 20 to Yes. 25 years. Yes, I agree with you. Yes, I agree. Immunity was just a word back the COVID, but after the young generation, especially the young generation and young students, have understood the correct meaning of health, and due to COVID, it has helped everyone to go
healthy, and And students are especially trying to be healthy and work out every day. yes, the thing of the flat schemes, kids have started playing among themselves a lot because they have formed this bond because they were not able to go out. So that bond is also helping them in nurturing their creative side and also increases their learning efficiency. So, and physical health Yes, also. because student, yes, I can का unfocused हो गया था basically during COVID. The student become unfocused, and because they can also play games in that particular area. There is no one taking responsibility when they go to schools and other activities. So there is a strict curriculum that this class is going on, this attendance should be fulfilled, and now in COVID, no one basically जब वो mobiles के लिए ऐसा लग रहा होता है कि वो मोबाइल से बट दे आर आल्सो डूइंग अदर एक्टिविटीज आल्सो तो उनका जो फोकस था वो पढ़ाई की तौर पे वो उतना नहीं बन पाया. Yes, because small kids have a lot of energy. They are a tank of energy, and that's why they want to move out. They want to see. They have lot of curiosity, and if we are confining them at home, then they will move to something. That's why they move towards mobiles. Of course, they don't know its effects, so it जैसे has एक both नेग positive and negative. And जैसे एक also due नेगेटिव to इम्पैक्ट work है from कि home, किसी भी बच्चे को many ग्रो करने के लिए सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, और वो स्पोर्ट जो शुरू में बहुत खेलना चाहिए, हेल्दी भी होता है, तो सोशल इंटरेक्शन एक बहुत जरूरी है किसी भी को ग्रो करने के लिए, तो वो बिल्कुल खत्म हो गया Hmm. है. and Yes. also due to COVID, companies provide work from home. So many people got benefited by working online and have a backup in the financial needs. Yes. And also, I would like to add to the point that small kids have learned, they are not able to speak properly because they don't have social interaction. So that is also a major issue nowadays, that kids are not able to speak properly. They are not interacting confidently. Yes, I agree. Yes, they have become silent. Yes, a certain type Yeah. of shyness has developed. Yes. But COVID also had this impact on the kids' parents because they had to provide for the laptop and for the mobile phones because everyone was working from home. So everyone needed their own laptop and their own phones. So this added to the cost also of the parents. So it was sometimes difficult for the kids to join online. And many parents, in the end period of online course, they said that we won't provide our kids with the phones and laptops because their eyes are getting affected a lot. So it's better that we study from the books rather than letting them sit in front of the laptops. Yes, Major Yes, call by एजुकेशन the का during COVID, parents. नेगेटिव yes, ये I भी रहा है also add this कोई. point to this. During COVID, the internet become very important to all of us. Like without internet, we are not able to do any of the things, study related or someone in the college. Everything is not possible without internet. So internet becomes the one of the basically important thing. Yes. Yes, I agree. Also, people got addicted to games and other which are not useful due to parents. Like in rural areas, people like parents didn't focus on what they are watching, either games or any other entertainment purpose. So there is no supervision of parents on many on students in many areas. So it does affect the students. यस आई एग्री. क्लास करने के बाद में बहुत टाइम बच जाता है स्टूडेंट के पास में, तो सीरीज, बहुत सारे टीवी सीरीज देखने में टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके कारण वो रात में भी काफी लेट तक सोते हैं, जिसके कारण उनका स्लीपिंग साइकिल पे इफेक्ट होता है. तो बहुत सारे सीरीज में काफी सारे स्टूडेंट मतलब इसमें बिजी हो गए थे कोविड टाइम में, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ज्यादा रहता था, तो टाइम को स्पेंड करने के लिए जी बिल्कुल। और कोविड की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बढ़ गया, जिससे जो
बच्चे ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी सही हो गया, मतलब कम पैसे में भी अच्छे से तैयारी कर पाए अपना, जो बाहर जाकर नहीं पढ़ पा रहे थे, इकोनॉमिकली भी सही हो गया। सही पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहा है। इसका पॉजिटिव भी रहा है और नेगेटिव भी रहा है। एक हेल्थ इश्यू भी हो गया इसकी वजह से। यस, ऑनलाइन कोचिंग के लिए तो काफी बेनिफिट हुआ है। ऑनलाइन कोचिंग के लिए स्टूडेंट को काफी परेशानी होता है पहले जाने के लिए, जिससे कि वो लोग सुबह जाते थे क्लास करने के लिए, दिन भर क्लास करके आते थे तो थक जाते थे, बाकी वो रिवाइज नहीं कर पाते थे। जबकि यहाँ पे घर बैठे बैठे वो लोग रिकॉर्डेड क्लास भी दे सकते हैं टाइम के अनुसार, बाकी लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं, जिससे उनको काफी बेनिफिट हुआ और टाइम उनका आने और जाने वाला टाइम बच जाता था। जी बिल्कुल, वो दोनों चीज मैनेज कर, कॉलेज भी और कोचिंग भी। यस, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है कोचिंग क्लास के लिए, काफी रहा है। And also, due to COVID period, people who are preparing for competitive exams in various cities didn't have good food facilities in the hostels. But there is an opportunity for them. Swiggy and Zomato kind of platforms are delivering food. So students faced health issues due to unhealthy foods provided in the hostel due to didn't get any required products from the market. During COVID, the new startups, some like Zomato and other new startups that are online, basically milk delivery and other basic requirement startups. I guess all of you now lack points and you are moving to different all pattern, Swiggy and Zomato. So who's going to conclude right now? Ma'am, I will. Yeah, okay. Swanima, you can conclude it. So we had a very good discussion today. We started from the impact of COVID on the different age groups. Like on the smaller age groups, they had not developed this idea of writing properly, whereas the higher age group was not able to had forgotten how to write long answers. On the college students, their third year training and fourth year project was affected, but they had better opportunities to prepare for competitive exams with lesser finances for their family. And also we talked on the physical impact on the students' health, like their impact on eyes and ears, and the call of the parents to withdraw their kids from this impact of the internet. So in total, we were a divided group of positives and negatives of COVID period on Indian students. Okay, so it's done. Now, first of all, coming to the introduction and conclusion, both were wrong. Okay, Swanima, you need to improve your conclusion. It was not a good one at all. Right? I'll tell you what to frame. And Shivam, are you there? Yes, ma'am. Okay, great. Listen to the feedback now. Yesterday also I pointed out, first, don't be over enthusiastic. You look so over enthusiastic in your this section of discussion. Telling you, I'm warning you, too much of conversation and cutting the person again and again would make you eliminate it out. Right? So don't go for that. Don't go for over. You don't have to speak so much over into it. And secondly, it's not when you started with your introduction, you gave so many points, like you told they have both the aspects and you started proving both the aspects. You are not to tell, you have to tell your framework. It's not a debate going on that you have to tell everything at the very start. Right? It should be a very generic one. Hi, good morning, everyone. Okay. So today we all have gathered here for a group discussion, and I hope it's supposed to be a fruitful discussion. The topic of discussion is this. According to my viewpoint, I think the COVID had negative impacts or positive impacts, or there was a blend of both positive and negative impacts. And I want to highlight the very first negative. You are the ruler of it. You can say when you start a GD, you are the ruler, right? So you are not to frame out कि सभी pointers बता देने हैं. इतना लंबा वो debate हो गया कि it started with a very negative, right? So you have to cut short. I told you yesterday also, cut short your points. Then Sonu came, right? Sonu, I think it's your first one, right? First, whenever you start, like suppose Shivam gave the introduction, then you have to speak your point.
Always speak it out. Are you going to speak in the favor of it, or are you going to speak against it? You just jumped it like, okay, Shivam, I agree with you, and then you started speaking on like some kind of a favor or something, right? पहले बताओ मैंने किस डायरेक्शन में मूव करना है, फिर अपना पॉइंट रखो, ठीक है? कभी भी स्टार्टिंग बिना उसके पॉइंटर के नहीं करनी है। युगांधर, यू स्टार्टेड विद हायर एजुकेशन के लिए, फिर साथ में फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब एक पॉइंट पे फोकस कर लो पहले, ठीक है? 2-3 पॉइंटर से इकट्ठे मत जाओ। यू आर सेइंग दैट दे गॉट अ चांस, द एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स, उनको एक्सपीरियंस मिल रहा था, चांस, साथ में बोलना शुरू कर चुके हो कि हाँ फिजिकल एक्टिविटीज पे आ गए। एक चीज को प्रूव करो ना पहले, लेट द व्हाट इज डिस्कशन एक्चुअली अबाउट, इट इज यू गेव अ पॉइंट, आई गेव अ पॉइंट, को करिकुलर एक्टिविटीज पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट, वो सारे डिस्कस करो कि को-करिकुलर एक्टिविटीज क्या, यू गेव अ पॉइंट दैट आई थिंक को-करिकुलर एक्टिविटीज आर बीइंग लैंड एंड नाउअडेज स्टूडेंट्स आर कन्फाइंड टू 4 room space, and today when we will see that they are more into video games and all that, they are not moving outside. आपने एक पॉइंट रख दिया, बस लेट द अदर्स स्पीक ऑन इट। किसी के पास कोई और पॉइंटर है, नहीं बोल पा रहे, आप अपना अगला पॉइंटर, बट वेट फॉर इट। एक ही चीज में सभी को पॉइंटर्स नहीं देने होते हैं, एक ही डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन इज 1-on-1, पॉइंटर देन डिस्कशन देन द नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है? वो गलत था, तो 2 नहीं देने हैं। उसके बाद स्वर्णिमा, यू स्टार्टेड लाइक सेम प्रॉब्लम विद यू, यू डिडंट जस्टिफाई लाइक आर यू गोइंग इन द फेवर ऑफ इट और यू आर गोइंग टू अगेंस्ट इट। Just told that I want to highlight a new dimension, that is age groups 3 to 5 online mode, and you forgot like where actually the main crux it is, right? आप चारों ने यही गलती की है, right? उसके बाद शिवम just jumped up, शिवम स्वर्णिमा को कंप्लीट ही नहीं करने दिया। कभी भी ये नहीं करना कि आप उसको पॉइंट बोलने नहीं दे रहे हो और साथ में कट कर रहे हो। डोंट अननेसेसरली कट, ओवर एक्टिव भी नहीं चाहिए, ओवर डल भी नहीं चाहिए, ठीक है? बैलेंस में चलो। Aditi, you were speaking less, but yeah, I like the pointers which you gave, लेकिन बाद में थोड़ी सी repetitive होनी शुरू हो गई। Yugandhar, same way. अब आपने मुझे बोला कि why you guys started targeting BTech students? Students था, स्कूल के बच्चे भी हो सकते हैं। सीधा अगर BTech स्टूडेंट्स को ना लेबोरेटरी वाला वो पार्ट नहीं मिल रहा है, मैथ्स के लिए या बाकी केमिस्ट्री लैब्स के लिए +1 +2 वालों को मिल रहा है, कि सिर्फ BTech वालों को नहीं मिला था? अकेले BTech वालों के लिए तो कोविड नहीं आया था ना, सबके लिए आया था आई थिंक। तो फिर खुद के वहां पे उसी तरह से नेक्स्ट में किसने किया था, गेट गजराज ने बताना शुरू कर दिया गेट की प्रिपरेशन के टाइप की। गजराज, युगांधर, एवरीवन एंड ऑल ऑफ यू गाइस एंड इवन स्वर्णिमा ने भी कंक्लूजन में वही बोल दिया कि हाँ बीटेक के बच्चों को, व्हाई यू गाइस आर ओनली कि हम पे कोविड आया था और किसी पे कोविड नहीं आया था, हम ही स्टूडेंट्स हैं, नहीं ना? Go for a generic one, right? उसमें एग्जांपल दे सकते हो that I think laboratory and object experiments नहीं हो पा रहे थे, job exposure नहीं मिल पा रहा था। We can think about like we all are from BTech background, technical वालों को नहीं exposure मिल रहा था। उसी लाइन को इस सीक्वेंस में बोलो, उस लाइन गलत थी आप लोगों की, ठीक है? उसके बाद आई थिंक अदिति, एक तो जब भी आप स्टार्ट करते हो ना, बीच में इंग्लिश में पॉइंट देते देते लाइन बन नहीं रही थी, हिंदी में शिफ्ट हो गए, और ये पहला पॉइंटर था आपका, राइट? जब भी पॉइंट बनाते हो पहला पॉइंट तो बना के रख लिया करो, या तो प्रॉपर हिंदी में बोल लो, या फिर ये भी मत करो, या मिक्सिंग से चलो। आपने पूरा आधा इंग्लिश में कंप्लीट करके हिंदी स्टार्ट किया, दैट शोज की, और दैट टू योर वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन, दो आई न्यू अबाउट यू, इफ यू आर गोइंग फॉर द फाइनल्स वहां पे नहीं आएगा, ठीक है? और आपका जो कंटेंट था, ही स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली, उसको ग्रूम करके आइडिया बोलो दैट द स्टूडेंट्स डेवलप्ड एम्पैथी, मतलब दे डेवलप्ड सम काइंड ऑफ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देयर फैमिली मेंबर्स, दे यूज्ड टू स्पेंड टाइम, पूरे प्रॉपर टाइम को कंप्लीट करो, उसी को ही आपने स्ट्रेच करके सिलेबस, लर्निंग, कुकिंग, एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया, या तो उसको शॉर्ट करके 2 dimensions that even the students were able to spend time with their family, they were out from the non-technical, that technical gadgets, plus they were involved in some kind of a co-curricular activities of family household course में involved हो गए थे। छोटा हो गया ना पॉइंट, पहले बना लिया करो, जब भी पहला पॉइंट सभी लोग अपना बना के लिख लिया करो कि फर्स्ट तो मेरा ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है? और वो भी जब जस्टिफाई कर रहे हो। उसके बाद गजराज गेट स्टूडेंट, वो आपका अभी गजराज योर कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी लेस, राइट? थोड़ा सा और पार्टिसिपेटिव करके जब बाकी बोल रहे हैं ना, देयर इज आई गेट टू नो अबाउट इट, आपकी वॉइस नोट इतनी स्लो होती है, आई हैव टू हेयर इट आउट, वहां पे इतना कोई फोकस नहीं करेगा। आई एम मेकिंग योर नोट्स, एवरीवन्स नोट्स, कौन कहाँ पे गलत बोल रहा है, वहां पे किसी को लेना देना नहीं होगा कि आई हैव टू राइट एवरीवन्स। राइट नाउ माय फोकस इज टू इंप्रूव यू गाइस, अदरवाइज मुझे ये कोई जरूरत नहीं पड़ी कि एक पॉइंट में लिखूं और सुनूं सबका, कहाँ पे तुमने क्या चीज गलत बोली है, वहां पे आएगा किसका क्रक्स अच्छा चल रहा है, किसने गलत किया है। शिवम बार बार कट कर रहा है, शिवम को पहले एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये बहुत डायमेंशंस है, ठीक है? अब तुम्हारे रेपिटेशंस कहाँ पे शुरू हो गए? राजू, आई थिंक राजू स्टार्टेड विद द रूरल एरियाज, अनहेल्दी फूड, 2 डिफरेंट पॉइंट्स हो गए राजू। हाँ,
पहले आप लोग फोकस करो रूरल एरियाज पे, चलो कि उनके पास टेक्निकल एक्सपोजर नहीं था, साथ में हेल्दी अनहेल्दी फूड का नशर हो गया। कहाँ पे लिंक हो रही है दोनों चीजें? ये नहीं अगर मेरे पास 2 पॉइंट है कि तो मैंने दोनों इकट्ठे ही बोल लिए हैं, अपने पहले पॉइंट को ही ग्रेसफुली रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर लिया करो, उसी को एग्जाम्पल के साथ रिप्रेजेंट करा करो। फिर स्वर्णिमा, she started test not on time, that new experience satisfied अदिति addiction of mobile। अब अदिति और राजू ने पहले ही बता दिया एडिक्शन ऑफ मोबाइल वाला, राजू ने भी आईज वाला। उसके बाद फिर से तुम लोग शिवम भी और सोनू भी, तुम लोग फिर से आ गए आईज की एडिक्शन, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और सोनू भी बता रहा है एडिक्शन हो रही है। रिपीट मत करो ना कि ये थोड़ी है मेरे को समझ आ रहा है, उन्होंने पहले पॉइंट दे दिया, उसी टाइम पे यहाँ तो अपना पार्टिसिपेट करो। 10 मिनट बाद तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं मैं भी बोल देता हूँ कि आंखें खराब हो रही है, शिवम बता रहा है, वो नहीं करना। सेम टाइम यू हैव टू थिंक वेरी, लिसन वेरी अटेंटिवली। मैंने कल परसों भी बोला था, अटेंटिवनेस दिखाया करो अपनी, कि उसी टाइम पे हिट करो टारगेट। कि अगर हेल्थ इश्यूज है, पहले बता रहे हो कि फिजिकल एक्टिविटीज, फिर आंखों पे आ गए, फिर कोई और हेल्थ इश्यूज, फिर मेंटल पे आ गए। मेंटल वाला बाद में उठाया, थिंक्स इट वाज स्टार्टेड बाय स्वर्णिमा, मेंटल हेल्थ वाला, राइट? उसके बाद Yes, दीदी टोल्ड दैट शी इज ओके विद इट। दिस वाज अ वेरी गुड पॉइंट। आइसोलेशन में जा रहे हो, बहुत बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, राइट? वो चीजें कहाँ पे मिसिंग है? वो जो मेन पॉइंटर्स थे तुम्हारे, वो तो तुम एंड पे लेकर गए हो। वो तुम हेल्थ पे ही बताओ ना, हेल्थ में हमारे क्या क्या आते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स, मेंटल एस्पेक्ट्स, हमारे जो भी आ जाते हैं, आईज वगैरह, सब कुछ उसी में आ गया। अलग अलग मत लेकर जाओ ना। मैंने उस दिन भी बोला था अटेंटिवनेस शो करो, दिस एक्चुअली काउंट्स इट आउट। किसी ने हेल्थ का उठाया तभी सोचो हेल्थ पे मैंने कोई पॉइंट लिखा है, उस चीज को मैं वो पूरा एक्सपोजर से बोल देता हूँ। स्टार्टिंग में जब भी जीडी स्टार्ट करते हो ना, 10 पॉइंटर मैंने बोला था बना लो, साथ साथ में जैसे कोई बोला टिक करते जाओ, भाई उसने ये पॉइंट बोल दिया, अब मैं इसको यहाँ तो ऐड कर लूँ या फिर मैं कट कर दूं कि मैं दोबारा बोल के कोई फायदा नहीं है, या उसको पॉलिश करके नए वे में बोलूं, ठीक है? कि इल एस्पेक्ट्स हो चुके हैं, हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट्स पड़े हैं, तो हमें आगे से हमें अवेयरनेस स्प्रेड हो गई है। आप ये बोल सकते थे कोविड ने ये हेल्प किया है कि अब से लोग प्रिपेयर्ड है, लाइक फर्दर अगर कोई वेव आती है, कुछ आती है, हॉस्पिटल्स एवरीथिंग दे आर प्रिपेयर्ड एंड स्टूडेंट्स आर इवन प्रिपेयर्ड, लाइक हाउ दे हैव टू ओवरकम दिस आइडिया। वो चीज हो सकती थी अगर बोलना ही था कुछ भी। देन इट इज गजराज ने डिसिप्लिन वाला पॉइंट, इट वाज गुड ऑफ योर्स, ठीक है, वो पॉइंट अच्छा था। शिवम का नए प्रोजेक्ट्स नहीं थे, सोनू का ठीक है, थर्ड, सोनू फिर से इट वाज अ रिपीटिशन फ्रॉम योर साइड, 3rd ईयर इंटर्नशिप, बीटेक का अकेला, ठीक है। स्टूडेंट सब पे फोकस करो, साथ में एग्जांपल्स दे दो, क्लियर? ये चीज मत करना आगे से। Socially gathering, वही new ideas, exposure, rest it was fine. Swanima, you had a good point. Mental health and all that slangs used in this educational purposes. This point was actually good, and if you justified that point, that was actually good. ये 2 points बहुत अच्छे थे। जो चीजें अच्छी थी, I'm telling you out, Aditi, there was an improvement. But यहाँ पे जो युगांधर, you started with the Zomato and all that, किसने start किया था? और शिवम ने startups, कहाँ से relevant था ये point? किधर आ गया ये? इफेक्ट ऑफ कोविड ऑन इंडियन स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स होने शुरू हो गए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जो है जोमेटो का खाना खा रहे हैं, अभी नहीं खा रहे, अभी भी खा रहे हैं, एवरीवन इज ईटिंग, राइट? तो ये पॉइंट जो रेलिवेंट नहीं है ना, जब पॉइंटर खत्म हो चुका है तब हम करते हैं कि कुछ तो हमने बोलना ही है, हम बोलेंगे तो ज्यादा तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, डाइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, जरूरत ही नहीं है। बेटर स्टे क्वाइट इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी गुड पॉइंट, देन थिंक अबाउट द रेलिवेंट आइडियाज। फिर आप ये बोल सकते हो कि इम्पैक्ट, जैसे अभी क्या था कोविड का इम्पैक्ट, पहले तो इंट्रोडक्शन बहुत सुंदर बन सकती थी इसकी, it has both positive and negative impacts. Let's discuss some of the positive points. Positive points discuss करो, क्या क्या positive points हैं? अवेयरनेस स्प्रेड हो गई, बच्चों में क्या आ गया, कोकर, अगर आपके कॉम्पिटिशन्स का आपने बताया था, आप एक्सपीरियंस से कर पा रहे थे, सबने पॉजिटिव डिस्कस कर लिए। नेगेटिव डिस्कस करो, नेगेटिव क्या है? हेल्थ इश्यूज नेगेटिव थी, इंटरेक्शंस कम हो गई टीचर से, प्राइमरी वाले बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा, सारा नेगेटिव इकट्ठा करो। उसके बाद नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी? रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी कंक्लूजन में स्वर्णिमा क्या आना चाहिए था? We had a healthy discussion. अपने point अकेले नहीं बोलने हैं. Some people were in the favor of it, some people were against it, and we discussed both the pointers. Like COVID has actually negative and positive impacts. But going to, you can say, coming ahead, we should focus that there should be a blend of online and offline classes also. Indian students need to, and we are getting prepared, like for the future, if such wave hits us house, we are being prepared and we have got some kind of a new experience so that we are able to train ourselves for further shortcomings या कुछ भी। तो देखो, इट इज ऑलवेज मैंने बोला था जनरिक एंडिंग करनी है, सभी ने पॉइंट्स दिए, और तुम ये बहुत अच्छा कर सकते हो अगर तुम इतने फास्ट हो। मैंने उस दिन भी बोला था, जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं आप लोग के, टू गिव योर फीडबैक, राइट?
जब आपने अपना कंक्लूजन समवन सेज कि मैंने कंक्लूड करना है, तो कोई किसी का बेस्ट पॉइंट मिलता है ना, जैसे सपोज करो मेंटल इशू पे डिस्कस हुआ था, युगांधर ने डिस्कस किया, सपोज कर लो प्रोजेक्ट्स पे डिस्कस किया, एक्सपोजर नहीं मिल रहा, तो वन ऑफ आवर फ्रेंड्स युगांधर डिस्कस्ड ऑन द प्रोजेक्ट्स, Diti even gave her viewpoint and that was a marvelous one, right? Mental issue is something and we are being this hit by it. So everyone gave different points and we had an enriched conversation, and the COVID had negative and positive impacts. So we are to boost up and look on the positive ones to overcome the negatives and prepare ourselves for the future betterment. That's it. Clear हुआ? लेकिन मैं तभी बोलती हूँ कंक्लूजन भी ये इजी चीजें हैं, कंक्लूजन करना बहुत इजी है, कंक्लूड करना है, सबके पॉइंट्स कंक्लूड करने हैं और अच्छा सा जनरिक देना है, लेकिन बहुत स्मार्ट वर्क चाहिए, ठीक है? और इंट्रोडक्शन में भी बहुत आप पे डिपेंड करता है। सी इंट्रोडक्शन में एक चार्म है, एक तो जनरिक दे रहे हो, एक यू आर हेडिंग द कन्वर्सेशन। आप स्टार्ट कर सकते हो, आप नेगेटिव पे से स्टार्ट करें या पॉजिटिव पे स्टार्ट करें, या अपना कोई अच्छा पॉइंट दे सकते हो बिल्कुल स्टार्ट पे। COVID, everyone knows that COVID was a bad phase of the life, but yeah, it has taught us a number of lessons. Everything comes with a lesson. Either teaches as or it gives us some kind of experience. या तो experience मिलता है या lesson मिलता है, तो हमें दोनों चीजें मिली हैं। We are prepared for the future. कितना अच्छा पॉइंट आप हेडिंग कर सकते हो, बट शॉर्ट, ठीक है? अदिति आज भी बेटर था कल से, बट कॉन्टेक्स्ट जो था वो शॉर्ट नहीं था, बीच में लंबा हो रहा था, 2-3 पॉइंटर मिक्स होते थे। क्लियर हुआ सबको व्हाट इज द शॉर्टकमिंग्स ऑफ एवरीवन राइट नाउ? Raju, participate more. Sonu, speak more. Gajraj, speak more. Yugandhar, you were trying to give good points, but अभी 2-3 pointers का mixture था, वो थोड़ा ध्यान रखो, right? Aditi के साथ I had multiple ones. Vanima joined after a long time, though it was good, normal, not very good, but just a generic ones. ठीक है? अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। आज का टॉपिक बहुत इजी था। Yeah, Yugandhar. I have attended PGCIL GD. They gave only 8 minutes. So everyone talked for only once, and who started discussion gave twice. So I thought I'll give whatever points I have when I got the chance. That's why I'm giving the points. See, when it is about the discussion, you have to fix it out. कितना curriculum है? It has hit on multiple targets. We can talk about physical health, dimensions. अब dimensions की अकेली heading 2 दिन, ठीक है? सिर्फ हेडिंग्स पे बात करना, फिर उस पॉइंटर को एक्सप्लेन नहीं करना, फिर वो नेगेटिव हो जाता है। जब भी आपके पास टाइम लिमिट है तो आपको क्या करना है? ओनली हेडिंग्स ऑफ द डायमेंशंस। अगर टाइम लिमिट ज्यादा है तो टॉक अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सी इवन योर 1 or 2 पॉइंट्स वुड जस्टिफाई एंड मेक यू सिलेक्ट इफ यू गिव दोस पॉइंटर्स रियली गुड। पॉलिश करके बोलोगे, मैंने ये चीज उस दिन भी बोली थी, कंटेंट आप लोग के पास अच्छा है, कंटेंट सभी लोग बोलते हैं, पर हाउ यू पोर्ट्रेट आउट, कितना पॉलिश करके बोलते हो, वो मैटर करता है। That actually matters. That is a game actually. ठीक है? थोड़ा सा वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। You cannot say it like in the first run, second run. इतना नहीं पता चलेगा। जो तो मैंने एक सिंगल के लिए मैं फीडबैक दे रही हूँ, जैसे मुझे अदिति में 2-3 बार, मैंने उसको कल भी अभी she got scolded, yesterday also, day before yesterday also, little bit, I won't say massive, but little bit there was improvement, right? And शिवम में अभी I am feeling the same. 2 दिन हो गए हैं, he is getting like giving lots of explanation. वो खुद को, तुम लोग आपस में बैठे हो, you can also judge each other. तुम लोग को भी सुन के लगेगा किसका पॉइंट अच्छा जा रहा है, किसका पॉइंट नेगेटिव जा रहा है, ये पता चलता है कुछ चीजों से, ठीक है? बट इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर। डोंट मिस अ डे, इवन अटेंड इट विद मी, विजेंद्र सर, किसी के साथ भी लगा लो, बट मेक इट अ टारगेट कि एक जीडी मैंने लगाना ही लगाना है, और जितना मैं ब्रेनस्टॉर्म कर सकता हूँ आइडियाज करो। ये मैंने सबसे इजीएस्ट टॉपिक दिया था। आई इवन यू कैन से द किड्स ऑफ, यू कैन से जूनियर क्लासेस, दे वुड हैव डन रियली वेल, और आप लोग का इतना अच्छा नहीं था। तो कल के लिए थोड़ा आई वुड गिव यू अ टॉपिक विच इज इमेजिनेटिव ऑल्सो, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली, ठीक है? डिफरेंट मैंने पुराने अपने जीडीज में बताया भी है, हाउ टू एक्चुअली यू हैव टू गो थ्रू सम जीडी, लाइक व्हिच डायमेंशंस यू हैव टू थिंक अबाउट, वो फोकस करके बनाते रहना अपने टॉपिक के आइडियाज, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन बिफोर आई कंक्लूड एंड एंड इट? ऑल ओके, राइट? कल हम इवनिंग में करेंगे जीडी. माय टाइम वुड बी इवनिंग टुमारो, मे बी लेट आवर्स, राइट? So I would let you know in the group. So attend it accordingly. Okay? Chalo. All the best. Take care. Bye-bye.